नाउ बाइक को बहुत बार लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोड कर लेते हैं. Our motive is not to load the bike unnecessarily just for a showcase. This is going to be the most practical and purposeful videos if you have a 390 adventure and you want to actually prep the bike. Hello and welcome back to KTV vlogs. So today's vlog is very special. आज के दिन मैं अपनी बाइक को fully prep करने वाला हूँ. जैसे मेरे previous videos में आपने देखा था, मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ and उसी के लिए मुझे अपनी बाइक को ट्रिप रेडी बनाना है. So आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे बाइक में लगनी चाहिए if you want to take the bike on a trip, on a long tour, considering the safety measures, considering the exact accessories that your bike needs for a long ride so that you and your pillion can be safe and can also make the most of all the products that you installing in the bike. मार्केट में आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है एंड कौन सा सेलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है. सो इसका एक प्रोसेस है जो हम कह सकते हैं कि एक होमवर्क करना पड़ता है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. एंड वो होमवर्क करने के बाद मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को finalize किया and now this bike is gonna get ready with a combination of a lot of different brands and I will show you what all have I bought. I'll unbox the products and install करवाएंगे. इस बार DIY नहीं होगा because that's a lot of accessories that's gonna be loaded. So let's go. Alright, so यही है वो सामान जो मैंने मंगवाया है. इसमें है क्रैश गार्ड्स एंड इसमें है बैक रेक और बैक रेस्ट फॉर माय पिलियन. सो लेट्स अनबॉक्स दिस. बाकी की कुछ एक एक्सेसरीज पहले लग चुकी है, हैंडलबार राइजर्स लग चुके हैं. इसी बॉक्स में है फर्दर इसके साइड स्टैंड एक्सटेंडर्स, नेक ब्रेसेस क्यों ये आपको ज़रूर बताऊंगा मैं. एंड या आई मीन ऑल बेसिक थिंग्स आर राइट हियर. सो कम लेट्स अनबॉक्स दिस. Alright, so that was quite a lot of packing. अब मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो आपको समझ आएगा, but then here's the glimpse. ये है हमारा क्रैश गार्ड and I think ये जब मैं लगाऊंगा तभी आपको दिखाऊंगा, otherwise समझना बहुत मुश्किल है because यहाँ पे एक नहीं दो बाइक के पार्ट्स है, मेरे और फैजल दोनों की बाइक्स के. So let's unbox the other one. Alright, so now इस बॉक्स में मेरी बाइक का बैक रेस्ट और टॉप बॉक्स माउंट. So let's unbox this. पैकिंग नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. इतना पैकिंग में तो मुझे लगता है किसी कस्टम से भी मुझे सामान नहीं मिलता जितनी अच्छी सुंदर पैकिंग में उन्होंने दिया है. Alright, so that's the back seat. यहाँ आएगा. कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है क्या? सूट नहीं कर रहा बाइक को सूट नहीं कर रहा, बट ठीक है, ये यूटिलिटी के लिए है, ये शो के लिए है नहीं. एंड अब तो बढ़िया चीज़ जो हम तुमको दिखाएंगे उससे तुमको मज़ा आएगा ब्रो. सो दिस इज द बैक प्लेट फॉर माय बाइक. इस पे टॉप बॉक्स भी लगा सकते हैं, इस पे आप सॉफ्ट लगेज भी लगा सकते हैं. दिस इज ऑल इन वन. इसके ऊपर आप अपने टॉप बॉक्स की इंडिविजुअल प्लेट्स भी लगा सकते हैं. एंड ये इतना गुड लुकिंग था कि मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर पाया. आफ्टर चेकिंग आउट ऑल द ब्रांड्स आई डिसाइडेड टू गो विद दिस वन. कौन सा ब्रांड है, क्या प्राइस है, सब बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, सो स्टे ट्यून. ऑलराइट, सो बाइक्स हो रही है प्रेप. अभी दो लोग आए हैं जो हमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं बिकॉज मुझे और फैजल दोनों को इतनी गर्मी में, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, मुझे और फैजल दोनों को नहीं करना था इंस्टॉल ये खुद से. सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर इट्स हैपनिंग. अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं करवाया खुद से, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी टूल किट चाहिए, इतनी बड़ी, जो मेरे पास नहीं है एंड भैया लोग के पास है. सो ऑलराइट, सो इट्स टेकिंग लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड बिकॉज क्रैश गार्ड्स है, उसके साथ अनफॉर्चुनेटली मैनुअल नहीं आई है. सो बहुत ही R&D करना पड़ रहा है, कुछ एक बोल्ट्स खोलने पड़ रहे हैं, वापस उसको इंस्टॉल करना पड़ रहा है. एंड मोर देन दैट अभी यूट्यूब में हम कुछ एक वीडियोस देख रहे हैं जिससे इंस्टॉलेशन का समझ आए. इसी एक चीज़ की वजह से मैंने DIY नहीं किया बिकॉज आई न्यू दैट क्रैश गार्ड्स में
बहुत टेक्निकलिटीज़ होती है, एंड वो अगर सही से ना लगे तो थोड़ा भी एक वाइब्रेशन जो उसको बस कर सकता है वो आपको बहुत इरिटेट कर देगा और आपकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। वंस फैज़ल की बाइक हो जाती है उसके बाद मैं अपनी बाइक पे करवाऊँगा। सो मेरी बाइक पे R&D नहीं होगी, मेरी बाइक पे डायरेक्ट लगेगा इस पर। सो क्रैश गार्ड मेन कहाँ से इंस्टॉल होता है मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर द क्रैश गार्ड विल गो इन, एंड यहीं से वो ब्रेस होगा पूरी बॉडी में। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ADV ट्राइब की बैच प्लेट के साथ MOTOIOI का इंजन गार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एंड वहाँ पे वो टाइट नहीं हो पा रहा। सो इंजन जो जिस बोल्ट पे लगता है वो पूरे अंदर जा ही नहीं पा रहा है। सो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप बैच प्लेट और क्रैश गार्ड ऑर्डर कर रहे हैं तो टेंटेटिवली सेम कंपनी के ऑर्डर करिए, सो दैट वो R&D करके रखते हैं, वो इशू नहीं होता है। So this is one thing to keep note of. 2,000 years later. Alright, so काफ़ी अरसे बाद आई एम बैक विथ माई बाइक। मॉड्स हो चुके हैं एंड आई एम सो सॉरी दैट मैं ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड दिस टुक अ व्हाइल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ये मैंने वीडियो शुरू किया था तब मेरे ख्याल से कोई दूसरा फेस्टिवल चल रहा था एंड अब कोई दूसरा फेस्टिवल चल रहा है। सो यही खूबसूरती है हमारे देश की, वेर इन पूरे साल फेस्टिवल ही चलते रहते हैं। एनीवेज, बात करेंगे आज इन दोनों बाइक्स के मॉड्स के बारे में। सो KTM 390X को अगर आपको लोड करना हो, अपनी टूर के लिए रेडी करना हो, तो आप क्या करोगे मेरे नज़रिए से आज मैं वो बताऊंगा। सो इन दोनों बाइक्स पे 19-20 थोड़े आगे पीछे मॉड्स हुए हैं, बट जो भी मॉड्स हुए हैं यूटिलिटी को मद्देनज़र रखे हुए हैं। मेरी बाइक में तब भी एक दो चीज़ें नहीं लगी है, दैट इज़ सिंपली बिकॉज माई प्रीवियस राइड दैट आई promised ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा गॉट पोस्टपोन्ड। एज आपने सुना होगा सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स आए एंड उन फ्लैश फ्लड्स के वजह से रोड्स हैड वॉश्ड अवे एंड हैड बिकम वेरी रिस्की for me to take my pillion on the tour. So yes, I could not make it on the trip, but then the bike is ready and here's what I can suggest to you. Alright, so first thing that comes to our mind when we go on touring or a highway ride is our safety. First, rider की safety, next आपके bike की safety. So when it comes to safety, the first thing that comes to my mind are the crash guards. So if you see, these crash guards on both the bike are from MOTOIOI. Why MOTOIOI? I'll tell you. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन ये जो crash guards है, they are very in sync with the existing design of the motorcycle. Whereas KTM has done a wonderful job with the designing and the graphics and the look of the bike. But then जितने भी after market आप देखोगे crash guards, चाहे वो आप जाना के ले लो या किसी दूसरी ब्रांड्स के ले लो, ADV ट्राइब के ले लो, they don't really fit in with the bike. They look like stuff जो बाहर से लेके लगाया है लोकल। I mean, मेरे नज़रिए से तो मुझे अच्छा नहीं लगता. So this is absolutely in sync with the design and looks absolutely purposeful to me. Now, this crash guard comes in two forms. So one is the upper part that protects this tank. Why is this tank important to be protected? Because that's a huge piece of fiber and it costs really somewhere around 40 to 45,000 rupees. That's a big chunk of money which I would not risk at all. So yeah, that's what it is, and that is why this part was absolutely needed to be protected. Otherwise जो stock crash guards आते हैं यहाँ पे जो लगते हैं, they also do a wonderful job, but then I was not very satisfied because वो आपके रेडिएटर ग्रिल और टैंक की एज को तो कवर करते हैं, काफ़ी हद तक आपके इंजन को नहीं कवर कर पाते because the engine is on the lower end. So this crash guard comes in two pieces. One is the upper one, whereas the other one is the base. Now थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा फैजल की बाइक पे, बिकॉज आप देखोगे the lower part of the crash guard on this bike is of different color. Rest, the design, the ergonomics, everything is same.
So yeah, coming onto this bike, if you see, there are sliders installed on both the sides of the crash guards. They have two purposes basically. So एक तब जब आप गिरते हो तो डायरेक्टली आपका क्रैश गार्ड नहीं कांटेक्ट में आता है एंड वो स्क्रैचेस नहीं लगते. दूसरी चीज़, ये उस पर्पस से बना हुआ तो नहीं है, बट हाँ हमें बहुत काम आता है लॉन्ग राइड्स पे. वी पुट अ फीट हियर एंड गिव्स यू अ रियली रिलैक्सिंग पोजीशन. You can flex your knee a little. So that's there. And then coming to front, you can see both these machines have fork sliders installed from MOTO FUSION. Now, why fork sliders? Because just in case if you ram into something and you don't want to basically damage your bolt that connects your front wheel to the forks, so that's one main reason. वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए एक प्लास्टिक का पीस लग जाता है. सो ऑलराइट, सो उसके बाद फ्रंट में दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट्स द रेडिएटर ग्रिल. अब इस बाइक पे शायद आपको दिखे ना दिखे, पर मेरी बाइक पे आपको बहुत एविडेंटली दिखेगा. देयर इज अ ऑरेंज radiator guard that I've put. Now this radiator grill is from ADV TRIBE. दोनों ही same company से है, but then that's the stock color and I have painted mine orange. Please do let me know in the comment section how did you like the difference. I'll put the snapshots of both for your reference. And why the radiator grill? Though company gives you a stock radiator grill, but then that's of nylon plastic and it's very nimble. बहुत easily कंकर पत्थर उसमें घुस सकते हैं. अब आप बोलोगे कंकर पत्थर रेडिएटर ग्रिल में कैसे घुसेंगे? जब आपका फ्रंट व्हील इन मोशन रहता है, सो जितना भी लूज ग्राउंड रहता है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो छोटे पत्थर हो या कंकर हो, सो वो बहुत स्पीड में आप स्प्रिंट होते हुए आपके रेडिएटर ग्रिल पे लगते हैं. Now radiator is very important because that is what cools your engine, right? And this bike anyways heats up a lot, so I cannot mess with the radiator grill. One more very important thing for safety is protecting the levers. So OEM already provides you with these, but then yes, अगर कभी fall में या crash में, I hope not, but अगर कभी ये टूटते हैं, so I have planned to install bark busters, which are highly recommended by most of the bloggers and most of these riders. So yeah, that's it for the safety. Now coming to the utility के लिए what we've installed is the MOTOURENN's phone mount. Now this mount is basically for your GPS. There's not much to it. And coming to the back, one very crucial thing that we both have installed is the top rack. Now Faisal has installed a VIATERRA top rack. This top rack is mainly for a soft luggage, which could basically be of maximum weight of 2 to 4 kilos, right? And I wouldn't recommend anything more than that, because if you see, this plate is not very strong and it's a holding on to the bike with just 1 or 2 bolts. The same that I have installed is from HYPERRIDER. Now this one can take a heavy load. They say of 20 kgs, but then I would not recommend more than 6 to 7 kgs, because as they say, this is also compatible with any universal top box rack. आप इस पे top box की जो plate रहती है, base plate, वो भी install कर सकते हो. And this is reinforced by this rod which goes right underneath the subframe to the chassis. So that is what it is. Now one very important thing that I feel one should do on a KTM 390 adventure is the neck braces. So आप बोलोगे why neck braces? So neck braces basically is a piece of metal जो आपके बाइक के चेसी और हेडलाइट के कंसोल के बीच में लगता है. बिकॉज थोड़ा सा वाइब्रेशन है जो आपको फील होता है एट 1500 to 2000 RPM. सो ये जो 1500 to 2000 RPM के बीच में जो वाइब्रेशन आपको फील होती है हेडलाइट से लेके आपके फ्रंट कंसोल तक, ये उसको मिनिमाइज करता है. सो या दैट्स व्हाट इट इज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड दैट वन शुड डू. एंड बाकी तो देखिए लगाने के लिए, जैसे फैजल वाज ऑन हिज राइड, सो ही इज इंस्टॉल्ड हिज lights, which even I have, but then I have not yet installed because this is my daily bike. At the same time, this is my touring bike, so I cannot afford to lose my
lights on the street while parking. So yeah, that's what it is about these two bikes. Now coming to the mirrors. ये mirrors की तो कुछ अलग ही कहानी है. ये mirrors आपने मेरी previous videos में देखे होंगे. ये वही mirrors है जो आज फैज़ल के पास है. उसके पीछे की कहानी किसी और दिन बताऊंगा. मैंने लगाए थे, मुझे इसमें टोटल यूटिलिटी फील नहीं हुई बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट was hidden by my shoulder, so I chose to stick to the stock ones, though I'm not happy with the stock mirrors. But then yeah, unless I don't find something better, I will stick to these. Now I want you to tell me in the comment section which of these two bikes did you like the most. बाइक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. एक की तरफ थोड़ा सा ऑरेंज हाईलाइट ज़्यादा है towards the headlight, and there's a difference in your crash guard colors in the bottom, and the main difference, yeah, it's the bash plate. Now bash plate मुझे भी लगानी है, but then I don't want to load the bike too much. बहुत ज़्यादा heavy हो जाने की वजह से बाइक की हैंडलिंग में फ़र्क आता है. Then yes, one very important thing that I have missed out right now was the side stand extender. As if you remember in my previous video, my side stand extender had fallen off due to the vibration. जिस बंदे ने ये काम किया था हमारे लिए, उसने कुछ ऐसा फॉल्टी काम किया था कि सारे ही पार्ट्स ढीले हो गए थे. एंड थैंकफुली 4 में से 3 बोल्ट गिर चुके थे, बट देन मेरा साइड स्टैंड एक्सटेंडर बच गया बिकॉज आई रियलाइज्ड इट इमीडिएटली. So yeah, these are the side stand extenders. These are very important because KTM 390 has a side stand which is not thicker than maybe say 1.5 inch at the max. And when you are on a soft ground or where you are on a muddy place, it's very easy for your bike to fall off because the side stand will get dug into the ground very easily. So this side stand extender or the side stand plate, whatever you call it, is again from MOTOURENN. Alright, so that's what it is about these two bikes. One more thing that I forgot to mention about what Faisal has installed is the toe guard जो चेन पे लगता है, ताकि कभी आप गिरो करो तो आपका टो या मोस्ट लाइकली आपके पिलियन का टो चेन और स्पोक्स के बीच में ना आए. And yes, we are yet to review this bike. We are looking for some good trails where we can go. So दोनों bikes में हमारे handlebar risers लगे हुए हैं, as you've seen in my previous video. So that's what it is now. कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा mods होने चाहिए थे. बहुत से लोग front के lights के ऊपर covers लगाते हैं, which I feel is not very much required because सामने से उतने बड़े पत्थर कंकड़ नहीं गिरते हैं. अगर कुछ बड़ी सी चीज़ में आप bash करते हो तो that will anyways not be able to save your headlight. So that is very irrelevant. Now coming to the screens, we've tried to order a lot. In fact, we had almost finalized carbon racing, but then the sad part is that the screen is way too high and it hinders my vision. So I would not recommend. The stock is still better. I'm still looking for options. It's been quite a while. मुझे तो अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है विंड स्क्रीन के लिए. बट देन या आपको विंड बफरिंग अगर करनी है तो या वी नीड वन गुड स्क्रीन फॉर दैट. एंड देन प्रीवियस वीडियो इफ़ यू सीन, हिमालयन में मैंने बोला था कि आपको हमेशा स्लाइडर फोक्स पे लगाने चाहिए, ऑक्सिलरी लैम्प्स ऑन द फोक्स. बट देन ऑन हियर ऑन KTM 390 देयर इज़ नो ऑप्शन के फोक्स पे मैं लगा सकूँ like my Himalayan. So yeah, this is where Faisal has installed it, and this is where even I'm gonna install it. Alright, so धूप तो चली गई है. So yes, now कुछ एक auxiliary lamps है जो फोक्स लाइटर्स जहाँ लगे वहाँ लगती है, but मैं तो नहीं रिकमेंड करता because that's too near to the ground and बहुत easy chances है कि वो टूट सकते हैं किसी भी तरह से. कुछ भी चीज़ टकरा सकती है, या जब आप वॉडल कर रहे हो, कोई एक ऑफ रोड ट्रेल से जा रहे हो, आसपास पत्थर रहते हैं, बहुत इजीली जगह डैमेज हो सकती है. सो आई वुड नॉट पर्सनली रिकमेंड. So yes, that's what it is. One more thing that Faisal has installed and I have not because मैंने अभी तक राइड की नहीं है, so I just simply stopped my modifications. But then what he's done is that what you can see, he's put in these tank pads. Now tank pads कब काम आते हैं? जब आप वॉडल करते हो या जब आप ऑफ रोड में खड़े होकर चलाते हो.
सो आपके नीज को और आपके इनर थाइस को एक फ्रिक्शन मिल जाता है उन रबर के पैड से, which is highly recommended. From what I have heard from him on his experience, बहुत ही बेटर है. अदरवाइज दो चीज़ें हैं, एक आपका जो ये पोर्शन है ग्राफिक का, ये बहुत ही जल्दी स्क्रैच हो जाएगा. दूसरा, वो फ्रिक्शन आपको नहीं देगा जो ऑफ रोड के टाइम ज़रूरी है. सो येस, दीज आर दीज tank grips. So this is one more thing that I have to do. So thank you so much if you've stayed on to this video for so long, and thank you so much for liking my video. Share if you really liked this one. Again, I'm gonna come up with a proper review once I get on to once I get a chance to go on a ride with this heat of mine. And yes, until then, take care. See you soon. Signing off, KTB Vlogs.